Okay, let's begin with our weekly time frame analysis. So as we can see, the way previous week has closed, we were expecting this candle to either close a small bearish candle and a big, or maybe something like this. But let's see how this week goes because already 2 दिन हो चुका है. Today is Wednesday and आज CPI भी है. So हम देखेंगे how we can plan this one. डेली पे जाएं तो लेट्स सी व्हाट वी कैन सी ऑन डेली टाइम फ्रेम. आई गेस मेरा इंटरनेट स्लो है थोड़ा. समटाइम जियो सक्स मैन. कम ऑन ब्रो. सीरियसली. दिस इज द 5G स्पीड. अनबिलीवेबल. ओके. सॉरी अबाउट दैट. आई थिंक मैं क्रॉप ऑफ नहीं कर पाऊंगा इसको. इट इज व्हाट इट इज. ओह दैट. तो दैट वाज वी वर एक्सपेक्टिंग अगर डेली पे जाए. कम ऑन, डोंट टेल मी इट इज अगेन going to take those all. Oh, that man. What's wrong with the Geo? Okay, at least a lot better than. तो अगर डेली पे देखें, see, yesterday in my breakdown analysis, I said this one. If we break this area, we are going to correct this whole downside move. जो price ने बनाया है. But if we break this one, then only. And I was quite confident about that कि we are not going to break this area. प्राइस कितना भी volatile है in this range. जो भी यहाँ पे प्राइस ने H4 पे रेंज बनाया है H1 पे, it doesn't matter कितना यहाँ प्राइस volatile है, but we are not going to break this range. But what I'm anticipating price to do in the CPI और जो भी है is just price to make something like this, a deep lower week, kind of this one. This is what I'm expecting from today price action, to be honest. This is what I'm expecting. Because every time frame is aligned with the structure. अगर CPI का डेटा बहुत ही बुरा आता है, then we can get this move. And if you check my S4 time frame yesterday, I said I'm expecting price to make a double top over here. Okay, and then something like this. So this is what I'm expecting today from the CPI.
2, nothing more or nothing less. But along with that, if we check, let me show you the structure. Structure is not at shift towards the bearish time. See, अगर ये अगर ये सपोर्ट जो मल्टीपल रिजेक्शन मिल रहा है, अगर ये ब्रेक होता है, if it's break, then this upside move, this upside जो move है, this will completely become fake out, which we can see on the daily time frame too. Come on यार, अरे साले को पता नहीं आज हो क्या गया इंटरनेट को। शक्स मैन, आज टाइम मिला है, टाइम निकाला, टाइम पे जगह हो तो इंटरनेट हग रहा है बंचर आज। And जियो का इंटरनेट 2-4 दिन से बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, चला सही से बात भी नहीं होता है कॉल पे। अब ये ओके, तो मैं जो बोल रहा था या दैट वाज कि सी प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को अपने को ब्रेकआउट दिया है। ओके, इट ब्रेक आउट दिया, क्लोज्ड अबव, देन नेक्स्ट कैंडल केम डाउन ऑन डेली टाइम फ्रेम। सो अगर इस फेक आउट को सस्टेन करना है, देन टू प्राइस हैव टू रिस्पेक्ट दिस एरिया एंड इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। बट यू नो, इवन देयर इज अ केस, आई एम अज्यूमिंग प्राइस इस रीजन को ब्रेकआउट दे सकता है। इट्स लाइक इट वोंट बी अ ब्रेकआउट। सी प्राइस ने ऑलरेडी इस रीजन कितनी बार रिजेक्शन लिया है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम। सो आई वोंट बी सरप्राइज अगर प्राइस आता है अगेन काइंड ऑफ लिक्विडिटी ग्रैब और विक्सॉ डिप करके फिर सीधा ऐसे चले जाएगा। इवन इवन सच थिंग आई एम एक्सपेक्टिंग इन सीपीआई, जैसे कि हमें ये जो वीक मिला था, दिस वीक वी गॉट इन दी एनएफपी न्यूज। दिस वाज वी गॉट, आई थिंक देयर वाज नो न्यूज। दिस वन वी गॉट जो भी कल का न्यूज था, एफओएमसी का जो फेड का टेस्टिमोनियल था, उसमें इतना प्राइस जनरली वॉलेटाइल नहीं होता, बट या स्टिल this we can expect, this is something we can expect. So even for that we will be prepared, but you know what, अगर something like that होता भी है, hold on तो बैक करता हूँ। okay, so अगर something like that we are getting, see one thing you will notice, price ना अपने को एक स्ट्रक्चर बना के देगा, something like that. but you know, बहुत से people बोलेंगे bro this is the head and shoulder pattern, see fuck you pattern है, in this, as per this pattern price will break this area and keep falling down. Yeah man, it is possible, I'm not saying ki it can't be, it is possible, but as per my overview, as per my experience, what I have seen, the way price moving kar raha hai, as long as I'm not seeing this region to be get break or closed below, I can't say this will break or come down. I will stay with my bias, this is what my bias, I have faith in my bias. अगर ब्रेक हुआ, I am getting any candle closure, then and then only I will say, you know what, प्राइस ने इस रीजन को ब्रेक किया, now we will going to go down. See, even though प्राइस ने स्ट्रक्चर को भी रिस्पेक्ट किया, see how beautiful the structure is, consolidation, then again price breakout, came down, प्राइस ने अगेन इस रीजन पे कंसोलिडेट किया. Now what, we are going to see another breakout around here. एंड इफ यू रिमेंबर, जो हमने डिस्कॉर्ड सर्वर पे सेंड किया था, आवर हाई टाइम एनालिसिस, आई थिंक 2 वीक पहले की बात होगी, इन दैट वी हैव डिस्कस दिस, प्राइस जब स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है तो ऐसा ही स्लो स्टडी करता है. सो मे बी हम यहाँ पे जो स्ट्रक्चर कॉपी कर रहे हैं, दैट समथिंग
very similar to this one. See, very similar to this one. Came up, consolidation, consolidation. यहाँ पे consolidation थोड़ा कम हुआ है, but yeah, kind of this scenario we can see over here, over there. तो we'll see क्या मिलता है और उसके हिसाब से हम कैसे खुद को प्लान कर सकते हैं. दैट इज समथिंग एज अ ट्रेडर वी कैन डू. हमें कभी भी 100% श्योरिटी नहीं मिलेगा कि या हमें ऐसा ही मिलेगा, ऐसा ही होगा. दैट समथिंग 100% lie which I can't say to myself, because whatever I'm doing, this is I'm doing for myself, for my trading improvement. So that's what something I'm expecting from price to do, because so far price have respected whatever we have planned on the high time frame analysis. If you remember, I think मैंने अभी तक वो सारे वीडियो अपलोड नहीं किए हैं on YouTube. या आज कर दूंगा मैं मे बी. Okay, so this is something I'm expecting from the CPI too. You know what? CPI की बात हो ही रही है तो let's check DXY. What is doing dollar index? डिक्सी का क्या हाल है? हाल कैसा है जनाब का? Okay, we have respected the structure. Not an issue. वीकली पे जाएं तो what we can see, या यहाँ पे ना हमें एक बेरिश स्ट्रक्चर बहुत टाइम से दिख रहा है. तो एज लॉन्ग एज हमें बेरिश स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट नहीं मिलता, वी कांट से कि डॉलर इंडेक्स इज गोइंग back in the bullish structure, in the bullish form. But yeah, dollar index अभी bearish formation भी नहीं है. This is something we also keep in mind. डॉलर स्ट्रक्चर में बस हुआ क्या है कि डॉलर इंडेक्स में हमें मूवमेंट स्लो मिल रहे हैं. There is not any volatility. If you see, dollar is still in the bullish trend. हमने बस प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया है, बट हमने प्रीवियस लो भी ब्रेक नहीं किया है. This doesn't define कि dollar index is now has changed its bias or whatever. So well, अगर डॉलर को नीचे आना है for gold to go down, then we need to see on lower time frame something like around this area. मे बी इससे यहाँ से रिजेक्शन अपने को मिल रहा है. मे बी यहाँ से समथिंग लाइक थोड़ा प्राइस कंसोलिडेट करे, फिर इसको ब्रेक करे, देन नीचे आए. देन अगर ऐसा होता है, then we can get the upside move on the gold. But yeah, dollar index is just for the overall bias, not 100% bias depend on the dollar index. So yeah, this is something we will see how we can go with this. But yeah, major dollar is not giving me any good good bias, so I will stick with the gold only. And let's see क्या होता है, हेड एंड शोल्डर काम करता है कि नहीं करता है. But yeah, I still be bullish honestly. मैं अपना जो bias है bullish पे ही रखूंगा, because I have not seen any sign जिसमें बोल सकूं यार now price has completely shifted structure. So right now अगर देखे जाए तो we are in this range so far. ये रेंज बहुत ही अच्छा रेंज है, बड़ा रेंज है. This is not a small range. See, 160 pips range, that's more than enough range to give us a good intraday trades or scalp trade. So this is for it going to be this high time frame analysis video. We'll see how what we can get in the this week and how we can get in whatever. Okay.
Just close this one.